ओके सो हेलो जैम एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और आप लोगों की तबीयत बहुत सही है। सो बेसिकली आज का जो क्लास है उस क्लास में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स, आप लोगों के जो क्वेश्चंस है उस एटॉमिक फिजिक्स के कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो तुम लोगों का नॉर्मल द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे लिखते हैं, and some various examples of writing down the spectroscopic terms for equivalent electrons and for non-equivalent electrons। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग देखेंगे आज। तो without any further ado, just let's initiate। But before that, all the students who are in the class, just let me know in the comment section that if you all can hear me properly or not। अगर आप लोग सब सही से सुन पा रहे हो, you can see the screen, then we can initiate today's class। Just give me one moment। Yes, so I think now we are in a good position to start। तो देखो सबसे पहला चीज जो हम लोग को देखना है वो ये है कि द पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम बोला गया है। एक क्वेश्चन से पहले शुरू करते हैं जहां पे क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉसिबल find the number of possible spectroscopic terms, find the number of possible spectroscopic terms, spectroscopic terms for one electron atom corresponding to for one electron atom corresponding to for one electron atom corresponding to n equals to 4, n equals to 4। So how will you do this? Just because we know that your n is equals to 4, so the allowed values of L are 0, 1, 2, 3, because L is always starting from 0 but its maximum value is always n minus 1, and the spin quantum number is always half for an electron, you know these things। So now just let's write down the values of L, S and J। You know L equals to 0, S equals to half, so L, S and J। I know that when L equal to 0, S equal to half, L equals to 1, S equals to half, L equals to 2, S equals to half, L equals to 3, S equal to half। The first case J will be equals to half, in the second case it's half and 3 by 2, in the third case it's 1.5 means 3 by 2 and 2.5 means 5 by 2, in the fourth case it's 2.5 means 5 by 2 and 7 by 2, that's 3.5। So these are the possible values of J which I have got। Now if you ask me what will be the terms, I can surely tell you the terms। This is your L, this is your S, this is your J, and here I'm writing down the terms। So the terms will be, of course, for the first case L equals to 0, so it's S, L equals to 1, so P, for this is 2, it's D, and then it's F, and of course S equals to half, the 2 into S plus 1, so 2 into half, that's 1 plus 1 is 2, multiplicity is always 2, and the J values you can put half, this is half, comma 3 by 2, this is 3 by 2, comma 5 by 2, this is 5 by 2, comma 7 by 2. How many numbers you have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 terms are you're getting. Total 7 terms I'm getting. How many terms you're getting? Total 7 terms I'm getting. Now let me tell you what is an equivalent electron, because equivalent electron, the definition is very, very important। So equivalent electron is very important, or optical electrons। ठीक है, optical electrons means electrons that are available in the partially filled subshell। Electrons which are available in the partially filled subshell, we call them the optical electrons। And yes, now I'm going to tell you about the equivalent electrons।
So first of all, equivalent, equivalent electrons. What do you mean by this? I can tell you that two or more than two electrons are said to be equivalent if two or more than two electrons, two or more than two electrons are said to be equivalent. Two electrons are said to be equivalent, are said to be equivalent, are said to be equivalent if number one, they have some n value, they have same n value. Number one, they have same n value. That means they are present in the same shell value. Number two, number two, number two, they have same L value. They have same L value. So all those electrons which have the same values of L and same values of N are called equivalent optical electrons. Just for an example, I can tell, carbon has two equivalent optical electrons in 2p subshell. Carbon has two equivalent optical electrons in 2p subshell. How do you know? Sir, carbon is 6. That implies 1s2, 2s2, 2p6, 2p2, 2p2. This is 1s2, this is 2s2, this is 2p2. Now see, I have these electrons are equivalent electrons because they have the same values of N, same values of L. They are equivalent electrons because they have same values of N, same values of L. But these are not optical electrons because this subshell is not partially filled, it's entirely filled. But these electrons are equivalent optical electrons because I'm only concerned with the optical electrons because that will actually give rise to my coupling terms. These electrons will actually couple between each other. So you can say this electron and this electron, they can couple because it's a partially filled subshell, and for both of these electrons L value is equals to 1 and N value equals to 2. Okay. So for first electron N1 L1, therefore for first electron N1 is 2, L1 is 1. For second electron N2 is also 2, L2 is 1. Done. Similarly, oxygen has 4 equivalent optical electrons. Similarly, I can tell. Similarly, oxygen has 4 equivalent optical electrons. 4 equivalent valent optical electrons. Because you know that for oxygen it's 8, right? So 1s2, 2s2, 2p, 4. So 1, 2, 3, 4. That's how it will be done. And of course, non-equivalent electrons means 2 or more than 2 electrons which have either n different or L different or both different, known as non-equivalent electrons. So of course,
Of course, of course, two or more than two electrons which have either two or more than two electrons which have either n different n or different L or both are known as non-equivalent electrons. Non-equivalent electrons. Non-equivalent electrons. That's a very important stuff. That's a very important stuff. Key equivalent electrons and non-equivalent electrons, you now have an idea. Example 2s1 3p1. If you ask me for the examples, I can tell you. If you ask me for the examples, I can give you examples also. Examples. Number 1 2s1 3p1. 2s1 3p1. So one electron in 2s, another electron in 3p. Number 2 is 3p1 3d1. Done. Now let's talk about the spectroscopic term for two equivalent p electrons. How will you write down the spectroscopic term for two equivalent p electrons? Now before that, हम लोगों ने देखा है कि कैसे दो नॉन इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखते हो. हमने करके दिखाया है कि कैसे दो नॉन इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन्स के लिए, देखो यहाँ पे दो p इलेक्ट्रॉन्स थे. ऑफ कोर्स ये नॉन इक्विवेलेंट थे क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2. इस इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 3 है. तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन थे. इनके लिए हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म यहाँ पे निकाल के दिखाए हैं. बट अभी हम लोग क्या करेंगे, दो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग, दो इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालेंगे. So let's find out the spectroscopic terms for two equivalent p electrons. So spectroscopic terms. Just give me a moment. Spectroscopic terms for two equivalent p electrons. For two equivalent p electrons. Like, for example, it can be 2p2 in n equal to 2 shell, two electrons are in p subshell, or 3p2 or 4p2. So for these electrons, what will be the spectroscopic term? There is a very simple rule. Write down all the terms which you have got from two non-equivalent p electrons and write the terms like singlet and then triplet. So write all the terms you have got from two non-equivalent p electrons in this format. How will you write it? First of all, you will make a table. Singlet terms ऊपर and triplet terms नीचे. ट्रिपलेट टर्म्स नीचे. तो क्या क्या आए थे? नॉन इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन्स
2p1 3p1 में सारे टर्म्स ये हैं, इनमें सिंगलेट टर्म्स पहले 3 हैं क्योंकि 1 1 1 मल्टीप्लिसिटी 1, ट्रिपलेट टर्म्स ये नीचे के हैं, देखो मल्टीप्लिसिटी 3 3 3, तो 1 is 0, 1p1 1d2, सिंगलेट टर्म लिख लूं, 1 is 0, 1p1 1d2। सिमिलरली यहाँ पे तुम लोग ट्रिपलेट टर्म्स भी लिख सकते हो, 3s1 3p012 3d123, 3s1 3p012 3d123। और कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फिर इक्विवेलेंट के लिए होंगे, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला है, यहां से शुरू करो, ये करा, इधर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, यहां से इसको ऐसे ऐसे ऐसे, okay, I can just सो दिस इज द वे, इससे शुरू करना, इससे ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, तो ये जो 3 टर्म तुम्हारे इस बॉक्स के अंदर आए हैं, यही 3 टर्म तुम्हारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होंगे। In this format, and choose the, and then choose terms in the box, choose terms only in the box, बॉक्स के अंदर जो है वही सारे टर्म्स तुम्हारे इसके लिए आएंगे, तो देयरफॉर क्या होगा तुम्हारा आंसर, देयरफॉर आंसर होगा 1 is 0, 3p012 3d123, ये तीनों टर्म्स तुम्हारे आएंगे कहां से बेटा, ये तीनों टर्म्स तुम्हारे कहां से आएंगे, तीनों नहीं, कितने टर्म्स आए हैं यहाँ पे, 7 टर्म्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 टर्म्स आए हैं यहाँ पे फॉर इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 7 टर्म्स आए हैं फॉर इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सा वाला ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा, हम लोगों ने बताए थे इस तरीके से, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर कार्बन दैट इज 3p0 विल बी योर ग्राउंड स्टेट टर्म, 3p0 विल बी योर ग्राउंड स्टेट टर्म, 3p0 तुम्हारे ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल होगा, 3p0 विल बी योर ग्राउंड स्टेट टर्म, इस क्वेश्चन में 3p0 विल बी योर ग्राउंड स्टेट टर्म। can you find out the ground state term symbol, can you tell the ground state term symbol, well of course it's 3p0 होगा, 3p0 वाला ग्राउंड स्टेट होगा, बट कैसे चूज किया, कैसे पता है कि इनमें से कौन सा ग्राउंड स्टेट होगा, तुम बोलोगे सर ऐसे निकाल लेंगे, सर ऐसे निकाल लेंगे, सर ऐसे निकाल लेंगे, कार्बन के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होता है ना, कार्बन के लिए सर जो होता है वो तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट निकाले थे ना सर, 3p0 आता है, सो डेफिनेटली ऐसे निकाल लेंगे, बट नो ऐसे निकाल सकते हो, बट इससे भी बहुत बहुत बेहतरीन एक तरीका है, वो तरीका मैं सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं हुन्स रूल। हुन्स रूल से तुम बता सकते हो कि सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, बाय दैट वे। Carbon atom is a basic example for this. Carbon atom is the basic example for this. नहीं, डेफिनेटली तुम हुन्स रूल से बता सकते हो कि डेफिनेटली क्या होगा फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यू कैन टेल। सो
बट व्हाट इफ आई आस्क यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तब तुम नहीं बता पाओगे, बट उसके लिए हुन्स रूल चाहिए. बाय हुन्स रूल, by Hume's rule you can tell first, second, third, all excited states. मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं. आई विल टीच यू हाउ टू डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट. But before that, let me tell you the spectroscopic term for two equivalent d electrons. Let me tell you the spectroscopic terms. Spectroscopic terms for two equivalent d electrons. Equivalent d electrons like 3d2, 4d2, 5d2, like 3d2, 4d2, 5d2. Can I have 2d2? No, if n equals to 2, you can't have 2d2, right? Because n equals to 2, L value can never be equals to 2. The Poisson values of L are then 0 and 1. So that's why you can never have a term called 2d2, right? You can never have an electron in 2d2. Good. So just let me tell you for two equivalent d electrons. Can you write down the terms for two non-equivalent electrons? Yes, sir. Singlet, triplet. So for two non-equivalent d electrons, I have written down, I guess. See, here I did it. 3d1, 4d1, 3d1, 4d1. Two non-equivalent electrons, I have written down the terms here. What is it? 1s0, 1p1, 1d2, 1f3, 1g4. And then for triplet, the terms are 1s1, 3p012, 3d123, 3f234, and 3g345. So if I write it down, it would look like this. 1s0, 1p1, 1d2, 1f3, 1g4. And triplet terms are like 3s1, 3p012, 3d123, 3f234, and 3g345. Now you choose which term I should take. So it's very easy. It's very easy. This one, then this one, then this one, then this one, then this one. So you should go like this, 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 this. How should I tell? You can make a box like this. And then this term has to be taken. Then of course this term. Then this term. Then this term. So I think I can tell you a better way to write it down. So you make the box like this. This one. Then this one. Then this one. Then this one. No, we will not take this. We'll go by this way. So of course you take this one, you can just draw a line like zigzag, like this way you can draw a line and you will get all the terms. Like this term, so this term, then this term, then this term, then this term. So the only resulting terms will be 1 is 0, 3p012,
1d2, 3f, 234, and 1g4. These are the only terms that will appear due to the LS coupling between two d equivalent d electrons. Now I'm going to tell you about the Hund's rules. Hund's rules. Hund's rule. Very important rules actually. Hund's rule. Very important rules actually. What do you mean by Hund's rule? See, Hund's rule is like you will given some spectroscopic term. उनको देख के कैसे बताएं कौन सा वाला ग्राउंड होगा, किसका एनर्जी कम होगा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका एनर्जी और ज्यादा होगा, ऐसे कैसे बताएं? Hund's rule से बता सकते हैं. Hund's rule I love. Hund's rule is a very nice trick. It's a very nice trick. तो क्या लिख सकते हैं? For equivalent electrons, the terms with highest multiplicity will have lowest energy. For equivalent electrons, the term with highest multiplicity will have lowest energy. For first rule है for equivalent electrons, the term with highest multiplicity that is 2s plus 1 will have lowest energy. Multiplicity means 2s plus 1 will have lowest energy. So tell me, here are some terms. किसका एनर्जी सबसे कम होगा? सर इसका मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसका मल्टीप्लिसिटी 3, इसका मल्टीप्लिसिटी 3. तो आइदर ये हो सकता है लोएस्ट एनर्जी का, ये हो सकता है. तो यहाँ पे 6 टर्म है, 3p0, 3p1, 3p2. यहाँ पे 6 टर्म है, 3d1, 3d2, 3d3. इनमें से कौन सा लोएस्ट एनर्जी होगा आप चूज करो. सर ठीक है, ये वाला लोएस्ट एनर्जी नहीं होगा, ये हमको पहला हुंड रूल से पता चल गया. पहला हुंड रूल ये कहता है कि जिस टर्म का मल्टीप्लिसिटी ज्यादा उसका एनर्जी उतना कम. सो जस्ट बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी अगर देखो तो इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिसिटी सेम है और सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये दोनों टर्म का एनर्जी कम हो सकता है. बट इनमें से भी किसका एनर्जी कम होगा वो देखना है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रूल. तो सेकंड हुंड रूल क्या कहता है? सेकंड हुंड रूल क्या कहता है? सेकंड हुंड रूल कहता है कि among the terms with same multiplicity, अगर तुम्हारे पास ऐसे कुछ terms हो जिनके multiplicity same है, among the terms with same multiplicity, among the terms with same multiplicity, with same multiplicity, among the terms with same multiplicity, the one with the highest L will have the lowest energy. The one with highest L will have lowest energy. Will have the lowest energy. तो सर पहले आपने कहा कि जिसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम. तो इन टर्म्स में से यहाँ पे 3 टर्म्स है जिनके मल्टीप्लिसिटी 3 है, यहाँ 3 टर्म्स है जिनके मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई होगा जिसकी एनर्जी कम होगा. अब इन सारे टर्म्स के मल्टीप्लिसिटी सेम है, राइट? यहाँ पे कितने टर्म्स है? 3. 3p0, 3p1, 3p2. यहाँ कितने टर्म्स है? 3. 3d1, 3d2, 3d3. सबके मल्टीप्लिसिटी सेम. तो कैसे चूज करूं किसका एनर्जी कम? सर जिसका L वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी कम. तो P और D में किसका L वैल्यू ज्यादा है? P और D में से किसका L वैल्यू ज्यादा है भाई? ओके एक सेकेंड, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हुआ है. 1s0, 3p102, ये 1d2 है. सॉरी ये 1 होगा. एक बार देख लो, यहाँ पे थोड़ा मेरा राइटिंग में मिस्टेक हुआ है. इट विल बी 1. ओके यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लिसिटी 1 है. ठीक है, नाउ यू सी इन सारे टर्म्स में इसका मल्टीप्लिसिटी 1, इसका मल्टीप्लिसिटी 3, इसका मल्टीप्लिसिटी 1. तो सबसे
कम एनर्जी अगर हो सकता है तो इन तीन टर्म्स में से किसी ना किसी का होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसका मल्टीप्लिसिटी 1 है, जिसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा उसका एनर्जी कम। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिसिटी, इन तीनों टर्म्स के मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है 3, तो डेफिनेटली इन तीनों टर्म्स में से कोई ना कोई एक टर्म तुम्हारा ग्राउंड स्टेट होगा। उसके बाद सर जी उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स को लिख दो, 3p0, 3p1, 3p2। इनमें से देखो किसका L वैल्यू ज्यादा है, जिसका L वैल्यू ज्यादा होगा उसका तुम्हारा क्या होगा, जिसका L वैल्यू ज्यादा होगा उसका तुम्हारा एनर्जी मिनिमम होगा। सर तीनों के ही L वैल्यू सेम है, तीनों ही P है, तो सेकेंड हुन रूल यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाया ग्राउंड स्टेट डिटरमाइन करने में। तीनों के ही L वैल्यू ज्यादा है तो L वैल्यू सेम है, तो डेफिनेटली L वैल्यू से नहीं होगा। जब L वैल्यू से नहीं हो रहा है तब क्या देखूं, तब थर्ड हुन रूल आएगा। थर्ड हुन रूल एकदम बता देगा कि क्या सीन है। थर्ड हुन रूल क्या कहेगा, among terms with same multiplicity and same L, among terms with same multiplicity, अगर तुम्हारे पास ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनके मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, with same multiplicity and same L, जिनके मल्टीप्लिसिटी भी सेम है एंड L वैल्यू भी सेम है, the one with J equal to mod of L minus S will have the lowest energy, will have the lowest energy if the subshell is less than half filled. If the subshell is less than half filled. इस चीज को हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लेट भी कहते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लेट, नॉर्मल मल्टीप्लेट भी कहते हैं। बट अगर उल्टा हुआ, सर मान लीजिए कि आपका जो सबशेल है वो मोर देन हाफ फिल्ड है, तब अगर सबशेल मोर देन हाफ फिल्ड है तो J इक्वल टू L प्लस एस वाला जो टर्म होगा उसका एनर्जी सबसे मिनिमम होगा। अदरवाइज द वन विद J इक्वल टू L प्लस एल विल हैव लोएस्ट एनर्जी, otherwise the term with J equal to L plus S will have the lowest energy if the subshell is more than half filled. The subshell is more than half filled. More than half filled. इसको कहते हैं inverted multiplets. Inverted multiplets कहा जाता है इस चीज को। Inverted, we call it, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख पाए। इसको हम लोग कहते हैं inverted multiplets. Inverted multiplets. आई थिंक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि तीन रूल क्या क्या है। मान लो तुम्हें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उन टर्म्स में जिसका 2s प्लस 1 सबसे ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। अगर कुछ ऐसे टर्म्स मिले जिसका 2s प्लस 1 सेम है तो जिसका L ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। अगर कुछ ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जिनका 2s प्लस 1 भी सेम है, L भी सेम है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा सबशेल मोर देन हाफ फिल्ड है या लेस देन हाफ फिल्ड है। अगर सबशेल मोर देन हाफ फिल्ड है
तो J का वैल्यू जिसके लिए L माइनस एस का मॉड होगा वो ग्राउंड स्टेट होगा, उसकी एनर्जी कम होगा। और अगर सबशेल लेस देन हाफ फील्ड है, अगर सबशेल लेस देन हाफ फील्ड है तो J इक्वल टू L माइनस एस का मॉड जो वाला टर्म होगा उसका एनर्जी तुम्हारा मिनिमम होगा। सबशेल अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो J इक्वल टू L प्लस एस जो टर्म होगा उसका एनर्जी मिनिमम होगा। सो बाय दिस वे these are the three rules of Hund's. If they by this way you can just find out the energy states for anything. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो जरा 1s0 3p012 1d123 इनमें से क्या बात कर सकते हैं सर? डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसके मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा है तो इसके लिए एनर्जी कम होगा, इसके और इससे और इससे एनर्जी इनके तो कम ही होंगे। अब यहाँ पे देखो तीन टर्म्स है 3p0 3p1 3p2 जिनके सारे मल्टीप्लिसिटी सेम, तो एल वैल्यू देखना पड़ेगा किसका एल वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका एल वैल्यू ज्यादा उसका मल्टीप्लिसिटी जो उसका एनर्जी कम, तो इनके तीनों की एल वैल्यू सेम है पी पी पी। तो अब किसके लिए देखेंगे? जे के लिए देखेंगे। अच्छा ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है फॉर कार्बन एटम 2p p में कितने हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है कितने? 2। तो इसका मतलब सर लेस देन हाफ फील्ड है, अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो एल माइनस इसका मॉड वैल्यू ले लो, जिसके लिए जे का वैल्यू एल माइनस इसका मॉड है। एल क्या है आपका? 1। एस क्या है सर आपका यहाँ पे? एस क्या है? एस है यहाँ पे आपका 1, एल भी 1 एस भी 1, इन तीनों टर्म्स के लिए ही एल भी तुम्हारा 1 है एस भी तुम्हारा 1 है, तो एल माइनस एस क्या होगा? 0, 0 का मॉड इज 0, तो ये वाला टर्म तुम्हारा ग्राउंड स्टेट होगा। ये वाला टर्म ग्राउंड स्टेट होगा तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फिर इन दोनों के टर्म में से देखो, इन दोनों के टर्म में दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है तो दोनों का एल वैल्यू देखो, इन दोनों के एल वैल्यू में से इसका एल वैल्यू बड़ा है तो ये होगा तुम्हारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका एनर्जी कम होगा इसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। सो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, इसी एग्जांपल को कराते हैं। फाइंड द एनर्जी स्टेट्स ऑफ कार्बन एटम। सो मैं इसी एग्जांपल को करा देता हूं, यहाँ पे एप्लीकेशन एग्जांपल करा रहा हूं फॉर कार्बन एटम। तुम लोगों को पता है बेटा कि इट इज 1s2 2s2 2p2, therefore 2 equivalent p electrons, 2 equivalent optical p electrons। तो टर्म सिंबल्स क्या है? टर्म सिंबल्स है तुम्हारे 1s0 3p012 मतलब 3p012 मतलब 3p0 3p1 3p2 and then 3d then 1d2 then 1d2। तो टेल मी जिसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम। सो इससे और इससे इन तीनों टर्म की एनर्जी कम होगा। अब इन तीनों टर्म्स में देखो किसका एल वैल्यू ज्यादा है, जिसका एल वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, बट तीनों के एल वैल्यू सेम है तो देखो कि ये मोर देन हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है। सबशेल लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है सर। सबशेल अगर लेस देन हाफ फील्ड है सर तो डेफिनेटली आप अगर यहाँ पे देखिए जे का वैल्यू जब मॉड ऑफ एल माइनस एस होगा जिसके लिए वो वाला ग्राउंड स्टेट होगा, तो यहाँ पे एल का वैल्यू तीनों के लिए 1 एस का वैल्यू तीनों के लिए 1 तो एल माइनस 0 जिसके लिए होगा मतलब ये टर्म तुम्हारा ग्राउंड स्टेट होगा। तो ये अगर ग्राउंड स्टेट है तो देखो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है 3p0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है 3p1, ये नॉर्मल मल्टीप्लेट क्योंकि जब जे बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है इसलिए इसको नॉर्मल मल्टीप्लेट कहते हैं। देन 3p2 3p2 देन सर जी इन दोनों टर्म के बीच में अगर विचार करें तो देखा जाता है दोनों का ही मल्टीप्लिसिटी सेम है तो एल वैल्यू देखो इसमें इसका एल वैल्यू बड़ा है तो इसका एनर्जी कम होगा तो 1d2, उसके बाद तुम्हारा इसका एल वैल्यू है तो 1s0।
तो इंक्रीजिंग एनर्जी, इस तरफ एनर्जी बढ़ रहा है, इस तरफ एनर्जी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी, increasing energy. Very nice example, increasing energy. Okay, now let me tell you, there is another important thing. There's another important thing. If I have a 3D2 configuration, suppose I have a 3D2 configuration. This is 2P2 configuration. Suppose I have a 3D2 configuration. Another example. For 3D2 configuration, I mean, when you have two electrons in the d subshell, titanium atom has this. Titanium atom has this configuration. Term symbol क्या होंगे? Terms क्या होंगे? 3D2 के लिए terms पता है ना तुम लोगों को? देखो 2 equivalent d electrons के लिए terms आता है 1s0, 3p012, 1d2, 3f234 and 1g4. तो terms लिख सकते हैं 1s0, 3p012, then 1d2, then 3f234, then of course you can say 1g4. इनके लिए बताना है कि किसका एनर्जी कम किसका एनर्जी ज़्यादा, इनके लिए बताना है। तो यहाँ पे देख लो, मोस्टली तुम लोग बता सकते हो कि जिसका मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है उसका एनर्जी कम, तो इस तीनों टर्म की एनर्जी कम हो सकती है, इनकी एनर्जी कम हो सकता है, इन बाकी तीनों टर्म्स की एनर्जी एटलीस्ट इन दोनों टर्म से ज़्यादा होगा। अब इनमें देखो किसका एल वैल्यू ज़्यादा है, पी के लिए या एफ के लिए? सर एफ का एल वैल्यू 2 है, एस पी डी 012, हाँ एफ का एल वैल्यू 2 है, इसके लिए एल वैल्यू 1 है, तो इसका एल ज़्यादा, मतलब इनमें से कोई एक ग्राउंड सेट होगा, इन तीनों टर्म्स में से कोई एक ग्राउंड सेट होगा। अच्छा सर 3D2 कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेस देन हाफ फील्ड है ना, लेस देन हाफ फील्ड है, इसका मतलब क्या होगा? लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, सर जी लेस देन हाफ फील्ड है ना? जी हाँ लेस देन हाफ फील्ड है। तो इनमें से देखो एफ एल का वैल्यू क्या है इन तीनों टर्म के लिए? एल का वैल्यू 2 है, एस का वैल्यू क्या है? एस का वैल्यू 1 है, तो लेस देन हाफ फील्ड है, तो जे इक्वल टू एल माइनस एस का मॉड, तो 1 एस पी डी एफ 0 1 2 3, एल का वैल्यू 3 है, सॉरी एल का वैल्यू 3 है, एस का वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 1 इज 2, 2 जिसके लिए आ रहा है वो टर्म ग्राउंड स्टेट होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखूं तो 2 3 4 3f2 3f2 का एनर्जी सबसे कम, उसके बाद 3f3, देन 3f4, देन 3f4 का एनर्जी। उसके बाद इन तीनों टर्म्स में देखो, इन तीनों टर्म्स के लिए भी 0 1 2 की तरफ से ही जाएगा, मतलब इसके बाद मल्टीप्लिसिटी इन दोनों का टर्म का सेम था, तो इनका एनर्जी इससे इससे और इससे कम होना चाहिए। नाउ आई एम सेइंग कि इन दोनों टर्म्स में से जस्ट बिकॉज़ इसका एल वैल्यू ज्यादा है, तो ये इनमें से ग्राउंड स्टेट पहले तुमने लिख लिया, इन तीनों टर्म की एनर्जी इन तीनों टर्म से कम होंगे, तो डेफिनेटली इसके बाद इन तीनों टर्म का नंबर आएगा कम एनर्जी में, तो इसके बाद इन तीनों टर्म्स में अगर देखा जाए तो जिसके लिए जे कम है वो मिनिमम होगा, मतलब 3p0, फिर 3p1, फिर 3p2, उसके बाद ये टर्म रहेगा, ये टर्म रहेगा, ये टर्म रहेगा, तीनों के मल्टीप्लिसिटी सेम है,
तो एल वैल्यू देखो, जिसका एल वैल्यू ज्यादा है उसका कम होगा एनर्जी, तो 1g4 आएगा। फिर उसके बाद एल वैल्यू किसका ज्यादा है, उसके बाद एल वैल्यू ज्यादा है इसका, तो 1d2। उसके बाद किसका एल वैल्यू ज्यादा है, 1s0 का, तो 1s0, ये होगा। डन ब्रदर, it's done, 1s0, it's done। 3f2, 3f3, 3f4, 3p0, 3p1, 3p2, 1g4, 1d2, 1s0। तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमने बता दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सा थ्योरम लिखा देता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है। थ्योरम में क्या बोला गया है, थ्योरम में बोला गया है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, मैं थ्योरम लिखा देता हूं। थ्योरम में बोला गया द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, the spectroscopic terms, the spectroscopic terms for the configuration NLQ मतलब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसका शेल नंबर 2 है, सब शेल नंबर L है, शेल नंबर N है, सब शेल नंबर L है, उसमें Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, are same as the terms of the configuration, as the terms for the configuration NL R minus Q, R minus Q, where R is the maximum number of electrons the subshell L can contain, जहाँ पे where R equals to 2 into 12 plus 1, where R equals to this, that is the maximum number of electrons the subshell L can, the subshell L can contain। L सबशेल में जितना मैक्स इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दैट इज योर 2 into 12 plus 1। तो अगर मान लो कि 2p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है, अगर दो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है p सबशेल में, तो इसके लिए जो टर्म्स आएंगे 2p4 के लिए भी सेम टर्म्स आएंगे। अगर p सबशेल में 4 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके लिए भी सेम। अगर मान लो तुम्हारा ऐसा एक एटम है जिसके लिए p सबशेल में 1 2 3 4 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है, उसके लिए भी सेम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आएंगे। ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक वो है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल में बता देता हूँ कि टर्म्स फॉर P5 आर सेम एज दैट दोस फॉर P1। टर्म्स फॉर NP5 are same as those of those for NP। अच्छा, P में P सबशेल में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P के लिए L का वैल्यू क्या होता है 1, तो 2 into 1 plus 1 that is 3 3 into 2 is 6। P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 6 minus 5, तो NP1।
एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जितने टर्म्स होंगे np5 के लिए भी उतनी ही टर्म्स होंगे. अगेन सिमिलरली टर्म्स फॉर np4 are same as those for np2. क्योंकि p सबशेल में 6 रह सकते हैं, यहाँ पे 4 है तो 6 minus 4 should be 2. टर्म्स फॉर nd9 are same as those for d सबशेल में 10 रह सकते हैं तो nd1. टर्म्स फॉर nd8 are same as those for nd2. दो इक्विवेलेंट d इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो टर्म्स आते हैं, 8 इक्विवेलेंट d इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी वही टर्म्स आएंगे. टर्म्स फॉर f1, f सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? f के लिए l का वैल्यू 3 होता है तो 3 2 plus 2 into 3 plus 2 into 3 plus 1 multiplied by 2, तो 6 plus 1 7, 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं तो 13 होंगे. सेम एज दोज फॉर nd13. सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सारे के सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये कैसे आता है. तो अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन के लिए या एल्यूमिनियम के लिए या ऑक्सीजन के लिए, तुम मुझे करके दो. कर पाओगे? टर्म सिंबल निकाल के दे पाओगे? अगर मैं तुम्हें कहूँ सबसे बढ़िया वाला है ऑक्सीजन के लिए दिखा दो. सो पहला एग्जांपल है कार्बन. पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1 है तुम्हारा कार्बन, CrBON, कार्बन दैट इज 2p2, एंड दूसरा वाला है तुम्हारा ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दैट इज 2p4. कैसे सर? कार्बन और ऑक्सीजन तो देख सकता है. कार्बन के लिए तेरे क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, राइट. तो यहाँ पे दो इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्सीजन के लिए आता है 1s2 2s2 2p, 4 हो गए ऑलरेडी, यहाँ पे 4 होंगे तो p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यहाँ पे 4 है. तो ये भी यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन्स है. So spectroscopic terms for 2 equivalent p electrons, spectroscopic terms for 4 equivalent p electrons. So I'm writing for 2 equivalent p electrons, for 4 equivalent p electrons. तुम्हारे terms कैसे होंगे तुम यहाँ से देख सकते हो. इसके लिए spectroscopic terms. Therefore spectroscopic term symbols for 2 equivalent p electrons are same as that of 4 equivalent p electrons. Valent p electrons. That is, what are the terms? So the terms will be 1s0, 3p012, 1s0, 3p012 and 1d2. बट सर यहाँ पे एक तकलीफ है. इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट है ये उसके लिए ग्राउंड स्टेट नहीं है, ये उसके लिए हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट है. इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट है वो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट है, वो इसके लिए ग्राउंड स्टेट है. क्यों? क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है, ये मोर देन हाफ फील्ड है. ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लेस देन हाफ फील्ड है, ये मोर देन हाफ फील्ड है. सो फॉर कार्बन अगर तुम स्टेट लिखोगे, कार्बन के लिए अगर तुम लिखोगे तो तुम्हारा आएगा, मैंने कार्बन के लिए शब्द लिखा भी है थोड़ी देर पहले, कार्बन के लिए मैंने लिखा है 3p0
3p1, 3p1, 3p2, 1d2, 1s0। ये कार्बन के लिए ऐसा जा रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन के लिए सर, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन के लिए भी तुम देखो, खून छूट लगाओ सर। इनमें से सबसे ज्यादा एल का वैल्यू जिसका होगा, सबसे ज्यादा मल्टीप्लिसिटी जिसका होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी इसका है 3, तो उसका एनर्जी कम होगा। बट सर यहाँ पे देखिए, ये जो तीन टर्म है, तीनों के लिए एल का वैल्यू सेम है, तो हम थर्ड होम रूल लगाएंगे, मोर देन हाफ एल, लेस देन हाफ एल, मोर देन हाफ एल। तो एल प्लस एस, देखो यहाँ पे एल का वैल्यू 1 है, सो 2 जो होगा वो मीनियम में होगा। तो 3p2 इसके लिए सबसे मिनिमम एनर्जी रखेगा 3p2, फिर उसके बाद एनर्जी ज़्यादा होगा 3p1 का, फिर उसके बाद एनर्जी ज़्यादा होगा 3p0 का। और फिर इन दोनों टर्म्स में से देखिए सर, एल का वैल्यू किसका बड़ा है? एल का वैल्यू बड़ा है इसके लिए, तो 1d2, फिर यहाँ पे तुम्हारा 1s0। तो ये है ऑक्सीजन के ग्राउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ग्राउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फॉर कार्बन, बिकॉज दिस इज लेस देन हाफ फिल्ड, दिस इज मोर देन हाफ फिल्ड। ऑक्सीजन के लिए दिस इज लेस देन हाफ फिल्ड, कार्बन ये है तुम्हारा लेस देन हाफ फिल्ड, इसको लिख सकते हो लेस देन हाफ फिल्ड, इसको लिख सकते हो मोर देन हाफ फिल्ड। दैट्स ऑल, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा इंक्रीजिंग एनर्जी, इस तरफ तुम्हारी एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग एनर्जी। तुम लोग कर सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए, जो मैं कल के क्लास में दिखा लूंगा, बट आज के लिए मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरा अभी एक मास्टर क्लास है, आप लोग जल्द से मास्टर क्लास को ज्वाइन कर जाओ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए मैं क्लास यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, एंड ज्वाइन द मास्टर क्लास एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।